अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज की हमारी जो है वीडियो है एमसीक्यूज के ऊपर। जो टॉपिक है हमारा एसेलुलर लाइफ। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज वायरसेस आर कंसीडर्ड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑप्शन ए डू नॉट म्यूटेट, ऑप्शन बी कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन सी दे डू नॉट लोकोमोट, ऑप्शन डी हैव न्यूक्लिक एसिड्स। बेटा, द राइट आंसर है जो ऑप्शन डी। इनके पास जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, इस वजह से इनको जो है कंसीडर किया गया है एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें इनके पास डीएनए और आरएनए होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these are found in all viruses? Option A enveloped nucleic acid capsid, option B DNA, RNA and protein, option C protein and nucleic acid, option D protein, carbohydrates, lipids. So बेटा, the right answer is option B, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सबके पास होता है, वायरल इन्वलॉप कुछ के पास होता है। ठीक है, और डीएनए और आरएनए जो है हमारे आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है सी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास जो है द इनर पार्ट ऑफ वायरन कंसिस्ट ऑफ। वायरन एक कंप्लीट वायरस के पार्टिकल को कहा जाता है। इसके पास कितनी चीज़ें होती हैं? ऑप्शन ए जीनोम, ऑप्शन बी कोर प्रोटीन, ऑप्शन सी both A एंड B। सो बेटा, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वायरस के अंदर जो है कोर प्रोटीन में हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं और जीनोम जेनेटिकल मटेरियल जिसमें डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स ऑफ वायरस प्रेजेंट इन। एंजाइम जो वायरस के होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए इनर कोर, ऑप्शन बी आउटर कोर, ऑप्शन सी both A and B, option D none of above. So बेटा, the right answer is option A, इनर कोर में हमारे पास जो है वायरस के पाए जाते हैं एंजाइम्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लाइकोप्रोटीन इन वायरस हेल्प्स। ऑप्शन ए अटैचमेंट विद द होस्ट, ऑप्शन बी रिकॉग्नाइज द होस्ट, ऑप्शन सी both A and B, option D none of above. So बेटा, the right answer is option C, both A and B. So the next question is who gave the virus latest classification? वायरस की लेटेस्ट क्लासिफिकेशन किसने दी? ऑप्शन ए बेटा हमारे पास है इवॉन्स का है, ऑप्शन बी हमारे पास है चार्ल्स चैम्बरलेन, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी बेल्टीमोर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बेल्टीमोर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज viruses are classified on the basis of option A host, option B genome, option C structure, option D all of above. So beta, the right answer is option D all of above. So the next question is smallpox virus have genetical material. स्मॉलपॉक्स के बाद जेनेटिकल मटेरियल कौन सा होता है? ऑप्शन ए डबल स्ट्रैंड डीएनए, ऑप्शन बी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ऑप्शन सी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ऑप्शन डी none of above. So बेटा, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वायरस के पास जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, स्मॉल पॉक्स के पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी नहीं होता और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी नहीं होता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वायरस हैव पॉजिटिव सेंस वायरस। ठीक है, पॉजिटिव सेंस आरएनए। ऑप्शन ए हमारे पास है रोबेला वायरस, ऑप्शन बी बेटा इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन सी एचआईवी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो बेटा, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रोबेला वायरस। अब पॉजिटिव सेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंस मतलब कि जैसे ही वायरस इंटर हो तो उसका जो आरएनए होता है वो डायरेक्ट काम करता है एज अ मैसेंजर आरएनए के तौर पे, उससे डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंस। ठीक है, या प्लस स्ट्रेंथ भी इसको हम कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग viruses have RNA as a template for the DNA synthesis? Option A HIV, option B influenza, option C rubella virus, option D mild virus, mild rashes. So बेटा, the right answer is option A HIV। HIV क्या करता है? डायरेक्ट बेटा आरएनए से डीएनए बनाना शुरू करता है, इसको हम कहते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है हमें। Which of the following can damage the virus outside the host? ऑप्शन ए pH, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो बेटा, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, टेम्परेचर एंड व्हाट pH कैन डैमेज द वायरस।
So next question is the genome in bacteriophage is option A single strand DNA, option B double strand DNA, option C single strand RNA. The right answer is option B double strand DNA. So the next question is tail fiber of bacteriophage consists of which of the following enzyme? Option A lysozyme, option B endonuclease, option C ribonuclease, option D none of above. So beta the right answer is option A in lysozyme enzyme. So the next question is in which of life cycle bacteriophage attach to a specific receptor of host cell? Option A adsorption, option B penetration, option C genome, option D none of above. So beta the right answer is option A adsorption. So the next question is which enzyme digests the bacterial envelope? Option A protease, option B lysozyme, option C both A and B, option D none of above. So beta the right answer is option B lysozyme. So the next question is induction processes takes place in option A lytic cycle, option B lysogenic cycle, option C both A and B, option D none of above. So beta the right answer is option B लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल इसको हम इंडक्शन क्या होता है जिसमें जो है वायरस क्या करता है अपना जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो होस्ट के जेनेटिकल मटेरियल के साथ ऐड कर कर एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसको प्रो वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास होता है ये प्रोसेस कहलाता है इंडक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैक्टीरियोफेज इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बैक्टीरियोफेज को बाकी सारी पॉइंट्स में यूज किया जाता है एक को छोड़कर। ऑप्शन ए वेक्टर, जेनोमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी फेज थेरेपी, ऑप्शन डी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। So beta the next question is the function of glycoprotein 120 is attachment with the host cell, option B help in fusion, option C help in budding, option D none of above. So beta the right answer is option A help in attachment with the host cell. So the next question is the function of GP41 is option A attachment with the host cell, option B help in fusion, option C help in budding, option D all are correct. So beta the right answer is option B help in fusion. So the next question is the genome of HIV is DNA, option B 2 single strand RNA, option C double strand RNA, option D none of above. So beta the right answer is option B 2 single strand RNA. So the next question is HIV have enzymes, option A endonuclease, option B integrase enzyme, option C reverse transcriptase enzyme, option D all of above. So beta the right answer is option D all of above. So the next question is HIV has dash genes. HIV के बाद कितने genes होते हैं? Option A beta 13, option B 20, option C 9, option D none of above. So the right answer is option C 9. So the next question is which enzyme help in formation of provirus in HIV life cycle? Option A DNase, option B endonuclease, option C ribonuclease, option D none of above. So beta the right answer is option B endonuclease. So the next question is HIV virus attacks on which cells? Option A liver cells, option B brain cells, option C helper T4 cells, option D all of above. So beta the right answer is option C helper T cells. The next question is symptoms of AIDS are dash types. Option A 3, option B 5, option C 2, option D 6. So the right answer is option A 3. So the next question is hepatitis D is caused by option A hepatitis D virus, option B viroid, option C Prions, option D none of above. So the right answer is option A hepatitis D virus. So the next question is source of Herpes simplex can remain. Option A 5 to 20 days, option B 5 to 10 days, option C 10 to 15 days, option D 20 to 30 days. So the right answer is option B 5 to 10 days.
So the next question is viral envelope is derived from option A host cell, option B outside the body, option C virus produced by genetical material. Option beta the right option is option A host cell. So the next question is which scientist first crystallized the virus? Option A Baltimore, option B Stanley, option C Charles Chamberlain, option D Antonio Leeuwenhoek. So beta the right answer is option B Stanley. So the next question is phytophages have dash genome. Option A DNA, option B RNA, option C both DNA and RNA, option D double strand DNA. So बेटा the right answer is option हमारे पास जो right है बेटा इसका है option C both DNA and RNA. So the next question is spherical shape of capsid is usually seen in option A zoophages, option B bacteriophage, option C phytophages, option D all of above. So beta the right answer is option A. So the next question is the outer core of virus consists of option A capsid, option B genome, option C envelope, option D both A and C. So beta the right answer is option D both A and C are correct. So the next question is one of the following is considered as plus-strand RNA viruses. Option A HIV, option B hepatitis B, option C dengue, option D Retrovirus. So beta the right answer is option C dengue virus. So the next question is virus evolved by using the option A cellular organelle, option B cellular enzyme, option C cellular energy, option D all of above. So beta the right answer is option D all of above. Next question is the pathogenicity of a virus depends upon option A immunity of host cell, option B effectiveness penetration, option C the overall environment inside the body, option D the overall environment outside the body. So beta the right answer is option A immunity of host cell. So the next question is bacteriophage escape from the host cell by the activity of. जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो होस्ट के बाहर निकलते किसकी एक्टिविटी को इस्तेमाल कर So beta the options are option A lysozyme, option B ribozyme, option C peroxisomes, option D glyoxysomes. So beta the right answer is option A lysozyme. So the next question is the smaller proteins are cut down and form a new virus structure by the process called option A integration, option B transcription, option C budding, option D assembly. So the right answer is option D assembly. So the next question is viruses that severely damage the motor neuron and cause paralysis is called option A HIV, option B dengue, option C polio, option D herpes. So the right answer is option C poliovirus. So the next question is proteins that cause pathogenicity in human and animals are called option A prions, option B viroids, option C polio, option D antibodies. So beta the right answer is option A prions. So the next question is smaller than viruses having single strand RNA with some double strand regions are called option A prions, option B viroids, option C minus strand virus, option D double strand RNA. So double strand viruses. So beta the right answer is option B viroids. So the next question is dengue fever, encephalitis and yellow fever are caused by which group of viruses? Option A arbovirus, option B retrovirus, option C rhabdovirus, option D rhinovirus. So beta the right answer is option A arbovirus. So the next question is Aedes mosquito is a vector of option A dengue, option B Ebola virus, option C hepatitis virus, option D measles virus. So the right answer is option A हमारे पास जो है dengue virus. So the next question is who discovered the viroid? Option A Theodore Schwann, option B Theodore O'Diner, option C Rudolph Shaw, option D Baltimore. So beta the right answer is option B Theodore O'Diner या Diner.
Next question in the Alzheimer's disease is caused by option A prions, option B viroids, option C virus, option D all of above. So beta the right answer is option A prions. So the next question is one of the following is due to the prions. Option A hepatitis D, option B insomnia, option C measles, option D nausea. So beta the right answer is option बी इंसोमिया, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ये बेसिकली प्रॉन्स की वजह से होती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द प्रॉन्स. ऑप्शन ए स्टैनली बी प्रूसनर, ऑप्शन बी डाइनर, ऑप्शन सी बेल्टीमोर, ऑप्शन डी स्टैनली. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्टैनली बी प्रूसनर ने सबसे पहले जो है प्रॉन्स को डिस्कवर किया था. So the next question is the mode of transmission of chikungunya is option A blood, option B fecal oral route, option C housefly, option D हमारे पास जो है none of above. So बेटा the right answer is option A blood. So the next question is the vector of Ebola virus is option A Aedes mosquito, option B bat, option C human infected blood, option D airborne droplet. So बेटा the right answer is option B bat. So the next question is a negative sense virus. Option A coronavirus, option B measles virus, option C Ebola virus. So beta the right answer is option C Ebola virus. So the next question is hepatitis C is dash sense virus. Option A negative, option B positive, option C it is DNA as a genetic material, option D none of above. So बेटा the right answer is option B पिलस स्ट्रेन सेंस वायरस. सो बेटा आज के हमारे जो है MCQs इधर कंप्लीट होते हैं. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.